ग्रीटिंग्स अगेन फ्रॉम मैटरनल हेल्थ सेक्शन, डायरेक्टरेट ऑफ फैमिली वेलफेयर। आप लोगों से हम हमेशा बात करते रहते हैं कि मैटरनल मोर्टेलिटी दिल्ली की हमें ख़त्म करनी है, और उस कॉन्टेक्स्ट में जब हम हैमरेज वाली जो वन ऑफ द 3 इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी है बात करते हैं, तो हमने बात करी पीपीएच किट की जो हमारी रेडीनेस को दर्शाता है। फिर हमने बात करी पीपीएच ड्रिल की जो हमारी एज अ टीम रेडीनेस को दर्शाता है कि कैसे हम फटाफट से उसको मैनेज कर लेते हैं उस गोल्डन आवर में जो इतना प्रेशियस है कि जिसमें हम ढीले पड़ गए कुछ भी असेसमेंट में या एक्शन में, तो हम वी कैन लूज द मदर। तो ये सब हम अब करने में सक्षम हो गए हैं, तो हम मैनेज करते हैं फटाफट से सारा फार्माकोथेरेप्यूटिक तरीका पीपीएच को मैनेज करने का। पर हमें ऐसी सिचुएशंस भी अक्सर आ जाती हैं जब इतना इंट्रैक्टेबल एटोनिक पीपीएच है कि वो नहीं रुक रहा है, हमने सब कुछ कर लिया और हमने बैलून टेम्पोनेटिंग भी कर ली और फिर भी नहीं हो रहा है, तो हम उसको ओटी ले जाने की तैयारी में रहते हैं। तो एक तो हम एनएएसजी गारमेंट को इस टाइम पे नहीं भूलें, उसकी हम अलग से भी बात करेंगे। मगर दूसरी चीज़ ये है कि हमें सूचर्स लगाने आने चाहिए, है ना, क्योंकि पहली जो हमारी सर्जिकल दिमाग में रहेगी वो ये रहेगी कि हम कंजर्वेटिव कर लें उसको, या इंटरनल आइलिक लाइगेशन में हमारी मास्टरी होनी चाहिए, सूचर्स में मास्टरी होनी चाहिए। तो सूचर्स टाइम भी कम लेते हैं, फटाफट से हो जाते हैं और वो सक्षम भी है, 90% वो इफेक्टिवली रोक पाते हैं पीपीएच को, तो हम फटाफट से क्लोज भी कर पाते हैं। बट इसके लिए भी हमारा ऑफ कोर्स जो पेशेंट है वो हीमोडायनामिकली स्टेबल होना चाहिए, पल्स 100 से ज्यादा हो तो फिर हमें सीधा हिस्टेरेक्टमी की सोचनी चाहिए, कंजर्वेटिव की नहीं सोचनी चाहिए। पर एक बार हमने कंजर्वेटिव की सोची तो हमारे को स्टिचेस सारे आने चाहिए। बहुत सारे स्टिचेस हैं, आप लोगों को पता ही है, बी-लिंच है, हेमन है, चो है, सिंपल यू सूचर भी है। मगर इसमें कम से कम 1-2 में हम अपनी मास्टरी कर लें, सारे के सारे सीखने की जरूरत नहीं है, और ताकि वो उसमें हम फटाफट से उसको कर पाए। तो इसके लिए हम ये भी कर सकते हैं कि दीवारों पे हम इसके लगा के रखें, जैसे हम प्रोटोकॉल्स लगा के रखते हैं तो पिक्चर्स लगा के रखें। बार बार हम अलग अलग यूट्यूब देख सकते हैं, अपने सीनियर्स की सुपरविजन में सीख सकते हैं। तो इसके लिए डॉक्टर शशिलता काबरा ने वीडियोस बनाई हैं, और वो वीडियोस बनाई हैं बड़े अच्छे, उन्होंने सेल्फ मेड मॉडल्स बनाए हैं यूट्रस के, जिसपे वो बड़े अच्छे से सिखाती हैं कौन सी सुई यूज करनी है, कौन सा धागा यूज करना है, कैसे उसको नॉट्स बांधनी है, और कैसे ये इफेक्टिवली ब्लीडिंग को रोक लेना है ना। आर्टीरियोल्स को हम जब कंप्रेस कर लेते हैं इन सूचर से तो काफी पेशेंट्स में हम उनकी जान और यूट्रस दोनों ही बचा पाते हैं। तो अब हम देखते हैं ये कमिंग वीडियो क्लिप्स में कि कौन सा सूचर कैसे लगाया जाता है, और उसको हम प्रैक्टिस करें उसी प्रकार से, और जान बचाने में हम अपना पूरा रोल अदा करें। एज ऑब्स्टेट्रिशियंस वी शुड नॉट लूज इवन अ सिंगल पोस्टपार्टम हेमरेज वुमन। इट इज अ टोटली preventable maternal mortality cause. So now I will show you the Cho's suture. This is also another type of compression suture only. I tell you one thing about the methodology of compression sutures. Actually, they are given through and through the muscle part of the uterus, and the purpose is to occlude the lumen of the spiral arteries, which is responsible for the postpartum hemorrhage. So, Cho's suture are usually given in the fundus of the uterus, just below the fundus of the uterus, in the body of the uterus, and it is applied in the localized area of bleeding. We can apply multiple Cho's sutures also. So now my assistant is holding the uterus. This is the anterior side of the uterus, and I am showing you the Cho's suture. For this, we have to take a straight needle because it has to pass through both the walls of the upper thick segment of the uterus. This is catgut. So suppose I am applying a Cho's suture here. So I will pierce through here and I will come out on the posterior wall. That's why the needle, long straight needle is required. Then I am piercing it posteriorly like this and coming out anteriorly. Again, I will go to the posterior side and coming out anteriorly. And again, I will come out anteriorly by piercing from the posterior side. So just have a look. From anterior side, it is looking like this, and from posterior side, it is looking like this. Now, assistant will hold the uterus, and I will just tie the suture. One turn and two turn. Make the knot square. It is done like this. Assistant will keep compressing the uterus. Second knot.
and the third knot. Similarly, we can apply one more chose suture like here, like this. Then piercing here and coming out. Just a minute. Here. Again entering from the posterior side, from anterior to posterior like this, and again coming anteriorly like this. And then first turn, second turn, the assistant will keep compressing the uterus. So these are the two chose suture applied, anterior side, posterior side. So now I will show you Hammond suture, which is a modified b-lynch suture only. The principle is same. In this case, there is no uterine incision. Suppose a patient has delivered vaginally and she had atonic PPH. In that case, if abdomen is open to control the atonic PPH, then we can apply Hammond suture. So how to apply the sutures? Please hold this. Uterus is exteriorized and I will pierce the needle through the point A and will come out through point C. This is point C. And hold it like this. Assistant will keep compressing the uterus and force central medium to the corner and will tie the sutures. Double turn. Square and second one, third one. Similarly, we will repeat the procedure on the opposite side. I will pierce through point F and will come out through point D. Assistant will again help me keep the uterus compressed. Single turn, double turn, make the knot square. Uterus compressed here. So this is Hammond suture in place. This is anterior side and this is posterior side. Anterior point F, A and C, or on this side anterior point F and posterior D. So now I am showing you the b-lynch uterine compression sutures on the model of the uterus. This is an educational model of the uterus, and I give sincere thanks to Dr. Sheila Mane, who has given me this educational model for teaching purpose. And it was made by Sir Christopher b-lynch. This is the anterior side of the uterus, showing the LSCS incision, upper flap, lower flap. This is the cervix, and this is the posterior side.
Now, before applying b-lynch sutures, we have to confirm whether the suture will work or not. So, we have to exteriorize the uterus, put one hand on the posterior side, one on the anterior side. We have to compress like this, and we have to see if the bleeding is reduced. If bleeding is reduced after applying this pressure, then we can presume that this suture will work, and we can proceed with these sutures. Now, what suture material are to be used? I have told you in details in my presentation. Here I am using PHRAT number 2, 90 cm length, 70 mm thickness, blunt round body needle. So let's proceed with the sutures. So we have to identify few points. On the anterior side, this is a LSA scar. There is point A, 3 cm below the lower incision and 3 to 4 cm medial to the lateral side. Then we have point B, 3 cm above the upper part of the incision and 3 to 4 cm medial to the lateral side. And similarly, we have point E and F on the opposite side. And we move the uterus posteriorly. Then we have point C, which is just behind the location of point E and point A and D. And we have point D, which is just behind the location of point E and F. And they represent the site of insertion of the uterosacral layer. Now proceeding with the sutures. This is point A, 3 cm below the lower flap. I am going from outside to inside at the lower flap and enter the uterine cavity. Then from inside to outside, I am coming out through point B, which is 3 cm above the upper uterine flap. Now my assistant will help me and I will curl around the fundus. This distance is 4 cm medial to the uterine column. Hold it like this. This is point C. Now I will pierce from point C and will come out anteriorly in the uterine cavity. Now I am inside the uterine cavity. Again I will pierce through point D and will come outside. So this is the location of point D. And I have come out outside posteriorly. Assistant will again help and wait immediately on compressing the uterus. Now I will enter the uterine cavity again through point E. And will come out again through point F. Assistant will throughout keep the uterus compressed. And now we will hold it. Then the uterine incision suture is to be closed. And we have to take utmost care of the angles. And now I will tie the sutures. Keep it compressed. First term, second term. This is squaring of the knot and it's to be. This is second suture. And this is third suture. So we look like this and we can cut. So this is how the b-lynch suture will look anteriorly. And this is how the b-lynch suture will look posteriorly.